Yeah. You just started, sir. Thank you. Good evening, our All India President, Dr. A.M. Deshmukh, sir, and all the respected faculty members, research scholars, students, and all the participants. I welcome all the participants in today's roundtable discussion on the topic biofertilizers. So let me brief means about the biofertilizers so that we can start to the discussion. So biofertilizers, we all know that these are the natural preparations and containing the beneficial microorganisms that help to enhance the availability of nutrients to plants by colonizing the root zone or the interior of the plant. So unlike the chemical fertilizers, generally they do not pollute the soil or water and are essential for the sustainable agriculture. So the most common type, all of us know the examples, nitrogen fixing bacteria like the rhizobium, azotobacter, azoospermillum, and the phosphate solubility microbes are pseudomonas and the bacillus, and potassium mobilizing bacteria along the symbiotic fungi, the mycorrhizas are present here. So these microbes play a important role in the improving the soil fertility, promoting the plant growth, and reducing the need for the chemical or the synthetic input. So the effectiveness of these biofertilizers not only depends on the microorganisms used, but also it depends on how it is formulated, how it is packaged and stored. So commercial production involves the culturing of the selected microbe system under the sterile condition, mixing it with the suitable carrier materials like the lignite charcoal or packaging into moisture-proof pouches. So their applications methods include that the seed treatment, soil mixing, spray, depending on the crop and the microbial type. But challenges are also there: inconsistent field performance, short shelf life, and the limited farmer awareness. Okay. But also at the same time, the advance in the biotechnology by using the genetically enhanced microbes, liquid formulation, and nano delivery systems are making the biofertilizers more efficient and accessible. So the means biofertilization integration into the mainstream agriculture is not only choice but a necessity for a greener and more sustainable agriculture in future. So let's begin the discussion on biofertilizers by sharing our research experiences, our practical observation, and the scientific insights. And let's explore how these microbial solutions are shaping the sustainable agriculture and contributing to the healthier soil and crops. So now I request all the scientists, faculty members, research scholars, and students who are present here to share your research experience, your practical observation, and if you have any knowledge on the means biofertilizers, even we can share in this platform. And I request especially to the students, if you have any query, if you have any means doubt in your mind, so this is the platform by where you can interact with the expert and you can solve your problems, you can get your answers from the expert directly. So now this platform is open for the discussion. So first I request our all India Okay. President Deshmukh sir to say something about this. Yes, yes. I Thank will you. be very happy to talk on this topic, biofertilizer. Let me tell you again, biofertilizer is the old terminology. The new terminology for it is a microbial inoculant. They are not called as a biofertilizer. Reason is that they organism do not act as a fertilizer. Organism in the soil produce fertilizer. That's why the name has been changed from biofertilizer to microbial inoculant. Now, what are the different types of microbial inoculant? In short, because I'm going in detail. First is the nitrogen fixer. In the nitrogen fixer, there are two categories, symbiotic and non-symbiotic. In the symbiotic, the most important is the rhizobium.
And in non-symbiotic, there are many: Azotobacter, Azospirillum, then the Gluconobacter, which is a very recently produced throughout the India. Then the blue-green algae, BGA. BGA is also, maximum research has been carried out in the coastal area on the BGA. It is also non-symbiotic nitrogen fixer. Then the phosphate solubilizer, two categories. One is a phosphate solubilizer, second is a phosphate absorber. Mycorrhiza is a phosphate absorber, whereas just sir has told, including actinomycetes, including pseudomonas, including fungi, they are phosphate solubilizer. Then potassium solubilizer is also there, very important category, which is required for the fruit crop. Potassium solubilizer, sulfur solubilizer. The insoluble sulfur is converted into soluble sulfur by thiobacillus. Then liquid biofertilizer is a recent concept. Then biofertilizer tablets and biofertilizer capsules are also recently produced. So in this manner, there are different types of fertilizers and research is going on throughout the India. I can talk hours together, but as the many, Nagrale sir has joined. Nagrale's work was also on biofertilizer. Dr. Padmanabhan also has joined. So many are working on the biofertilizer. Let them share their experience, but in short, and Bipran sir will control everyone. Thank you. Thank you. Over to Bipran sir. Thank you so much for sharing your observations and research experience. And also, I request all our participants to just write your name, designation, and if possible, give your phone number. Not necessary, but your mail ID is mandatory, so that the students or a scholar can interact with you or connect with you. Just write your name and the institution name and mail ID. So now I request Dr. Amol Prakash Rao Nagrale sir to share his research experience or scientific insights to us. Dr. Nagrale sir, am I audible to you, sir? Sir, yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Uh, Good evening, sir. Good evening. Just I want to one questions related to the. Can I ask you one question to Deshmukh sir? Young Deshmukh sir Is available? Okay. Anyone from our group? I would like to ask one questions. What is the pH range and salinity range of these commonly available biofertilizer? Means Sir, whatever kindly the. first you introduce yourself to the audience, sir. Okay, okay. Ji. Yes, myself, Dr. Amol Prakash Rao Nagrade. I am the assistant professor in Sri D.M. Burungle Science College, Shegaon. Yes, sir. So, is it okay, sir? Yes, yes. Thank you. So can you share your some research experiences with the students and the scholars are here, sir? Because So, get, what type of work I am doing, sir? I want to do basically, my area which is saline in nature. The soil of agriculture soil, it is saline in nature, highly saline. And the agriculture people, farmer using the biofertilizer which are available in the market. But what I found that the microorganisms survive in a particular or optimum pH, or they can grow on particular saline condition. So these market biofertilizer are not as much useful in saline area. So I want to ask anyone knows how to what is the range of pH of the biofertilizer? I mean, in which range it is work, and what is about saline?
Okay, sir. Thank you, sir. Sharing faculty member or scientist is present here. I request everyone to share the research experiences with the students and the scholars present here, and to all the audience. Sir, I want to answer the question which sir asked just now. Mm-hmm. Sir, the normal जो average range होता है that is about 6.5 to 7.5 if we speak, and थोड़ा fluctuation रहता है depending on the microorganism we use. ओके And ओके जैसे कि आपने बोला कि salinity अगर अपन rhizobium की बात करें 0 to 3.5 जो रहती है, हाँ, तो उसका एक सॉल्यूशन जैसा कि अभी सर ने ओके इंट्रोडक्शन में बोला कि हम्म लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स आ गए हैं मार्केट में, जस्ट हम्म रिसेंटली इनको यूज किया है, तो इसमें प्रोटेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं, इसी रीजन से इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, मेनली सैलिनिटी के लिए। तो लिक्विड इसमें ग्लिसरॉल और कुछ कैप्सूल भी लेकिन यूज किए गए हैं। हाँ लेकिन जी। मैम यस मुझे सर। ये लगता है, देखो आपको क्या लगता है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो भी अवेलेबल मार्केट में सॉइल फर्टिलाइजर है, देन द लिक्विड फर्टिलाइजर के अलावा जो फर्टिलाइजर अवेलेबल है, एंड दीज फार्मर आर यूजिंग, बट दे आर यूजलेस इन सलाइन इन सॉइल, एम आई राइट? Hello, यस सर। hello. So Hello there to is all no of you. use of, there is no use of the biofertilizer which are available in market for the saline soil. Okay. Yes, so that's why modifications are done nowadays. Like Hmm. protectants, so, little quality of protectants are there in them also. Yes, yes. होता है. So Okay, okay. it's not like that they are not useful. They are not that much helpful as compared to liquid biofertilizers. हाँ हाँ, yes, yes. Can I Means answer? optimum. Hmm. Yes, 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 Rajnish sir. yes. Hello, Rajnish Patil this side, Chairman Arsto Prakash Innovation Private Limited, CEO, Yogi's Adventure Private Limited. From last 8 years, I'm working on biofertilizers, and this is my startup. So, सर एक्चुअली आपने जो बोला कि सलाइन वाटर के अंदर जो है, सलाइन कंडीशन के अंदर जो आपका बायोफर्टिलाइजर काम नहीं करता, बिल्कुल हराश कंडीशन अगर है, पीएच बहुत ही ज्यादा अप है, तो वहां पे काम नहीं करेगा। नॉर्मल अगर 7.8 तक का जो पीएच है उस पे मैंने काम किया है। सो फर्स्टली जो मेरे ट्रायल्स रहे उसके अंदर मैंने जो है 0.5 नॉर्मेलिटी का फॉस्फोरिक एसिड और काउडंग बेस के अंदर एक मैंने उसको दिया, और आफ्टर दैट पीएच नॉर्मलाइजेशन उसका हो सकता। जो मेरा एरिया है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा होम टाउन हरियाणा में है। सो भिवानी, जहाँ पे कार्बन कंटेंट बहुत डाउन जा चुका है और सलाइन वाटर वहाँ पे बहुत ज्यादा है। सो वहाँ पे जो है एल्कलाइन मीडियम बहुत ज्यादा हो चुका है, जहाँ पे मिट्टी बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं दे रही है। सो वहाँ पे हमने ट्रायल्स लिए थे और काफी सक्सेसफुल रहा। सो उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें फॉस्फोरिक एसिड 0.5 नॉर्मेलिटी का जो है हमें उस वहाँ पे यूज करना पड़ेगा काउडंग के साथ। सर सर ये जो आपके फॉस्फेट यूज अगला जो भी फर्टिलाइजर बना अपन जिस ऑर्गेनिक से ही अल्कलाइन कंडीशन के बायो फर्टिलाइजर बनाया, तो सर एक बार क्या रिपीट करेंगे? आपका आवाज मेरे को ब्रेक हो रहा सर ये जो बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल है, है जी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, अभी आप फास्फोरिक एसिड का यूज करके न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये जो यस, माइक्रोबियल कल्चर है, ये अगर अपन ने हाईली सलाइन और अल्कलाइन कंडीशन में ग्रो होने वाले वहां से अगर वो बैक्टीरिया आइसोलेट किए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरी आरडी टीम अभी इसी चीज पे वर्किंग कर रही है, जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर हराश कंडीशंस हैं, वहाँ पे हम्म हमारा आइसोलेशन चल रहा है। हम्म सो हम्म कुछ हम्म आर के बैक्टीरिया वहाँ पे हो सकते हैं जो हमारे को ये कुछ भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट वहाँ पाए हमारे को प्रोवाइड कर सके। सो हम्म, उस पे ही आइसोलेशन का काम चल रहा है और गोइंग ऑन रिसर्च है, शायद हम इसमें कामयाबी हमें मिले। क्योंकि हाँ अभी तक जो मार्केट के अंदर जो अवेल हैं, मार्केट के अंदर जितने भी बायोफर्टिलाइजर्स अवेल हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसके अंदर यूज करते हैं, जो इनोकुलम हमारे हैं, वो सारे हम्म, के सारे वही चल रहे हैं जो हम शुरुआत से यूज करते आ रहे हैं। उनके अंदर हाँ कोई आरडी का अभी कंसेप्ट नहीं आया है। और रीजन हम्म ये रहा है कि कोई भी कंपनी उस पर आरडी इसीलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि फार्मर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है उस चीज का।
अच्छा अच्छा। अभी ट्रायल्स के लिए सर इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेट 600 एकड़ के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के अंदर मैंने उनको दिया है। काफी अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला है वहाँ। ओके सर। लेकिन इसको सर अपन what is the ऑप्टिमाइज बायो फर्टिलाइजर। inoculation what is the हेलो। inoculation time, because we know that phosphoric acid is not beneficial for most of the microbes. एक्चुअली 0.5 आपका नॉर्मेलिटी का अगर फॉस्फोरिक एसिड रहेगा वो हमारे जिस टाइम पे हम अगर इंटीग्रेटेड हमारे इस पे भी जाते हैं कि इरिगेशन सिस्टम भी हम यूज करते हैं, हम कई जगह पे ड्रिप वगैरह भी यूज करते हैं, तो उसके लिए भी वही यूज किया जाता है। हमारे पास अभी तक उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सो उसको डिग्रेड कर हो जाएगा, वो डिग्रेडेबल है एज कम्पेयर टू जो हम डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो डिग्रेडेबल नहीं है। एज कम्पेयर टू दिस जो है फॉस्फोरिक एसिड काफी कंट्रोलेबल है। सर अपन ऑप्टिमाइज बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, है ना? ऑप्टिमाइज बायो फर्टिलाइजर सर हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम अभी जो हम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होगा कि अलग अलग जगह पे ना जो सैलिनिटी है, जो उसका पीएच लेवल है वो डिफरेंट है और वो वेरी कर रहा है। अच्छा। वो कंट्रोल नहीं है, वो वेरी कर रहा है। हम्म ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर जो है वो डाउन जा रहा है, जिसकी हम्म। वजह से हमारे। और सेकंड थिंग, जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, केमिकल जो यूज हो रहे हैं आपके एग्रीकल्चर केमिकल। के अंदर, वो हाँ। सारे के सारे जाके 90% तो सारा का सारा जो है केमिकल जाके आपके सोइल के अंदर ही रह रहा है। सो उससे हम्म पीएच उसका पूरा का पूरा चेंज होता जा रहा है। आप कितना हम्म उसको कंट्रोल कर लोगे? तो हम्म। हमारा सबसे सर पहला बट स्टेप यही हम होना चाहिए उसके कि हम उसको जगह कंट्रोल करें। नेचुरली फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज आते हैं, अपन यूज करते हैं जो नेचुरली रॉक से फॉस्फेट को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो अपन वो भी तो यूज कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ। जैसा कि अभी ये- देशमुख सर ने बताया था, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हमारे को हम्म रॉ मटेरियल हाँ तो जी। उनको देना पड़ेगा ना। वो हम्म कहाँ से कहाँ तक ओके। किस चीज को लेके जाए? अगर राइजोबियम के पास नाइट्रोजन प्रॉपर नहीं पहुंचा, किस चीज को फिक्स करेगा वो? वो किस चीज को फिक्स हम्म। करेगा? अच्छा। तो हमारे पास वो भी तो चीज चाहिए ना। सो मेरा ये मानना है, जो मैंने 8 साल में सीखा, मैं सीसीएस में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बायो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल हेड रहा। सो वहां पे मैंने जिस टाइम पे देखा कि बैक्टीरिया इज जस्ट लाइक दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टर्स। कुछ हैं जो सोल्यूबलाइज करते हैं, कुछ है जो मोबिलाइज करते हैं। सो दे आर डिफरेंट कैटेगरीज। सो हम हम्म कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा फंगस हम वहां पे यूज कर रहे हैं? सो हम्म। उनमें आगे जाके धीरे धीरे मेरे ख्याल से काफी हमारे को काम करना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आइसोलेशन चले, प्रॉपर उसका करेक्टराइजेशन हो, और उसके बेसिस पे हम उसको देख पाए। सर जैसे हमारे यहाँ बुल्डाना में एक लोनार क्रेटर है, उसकी पीएच लगभग 10 के ऊपर है। तो हम्म। इज इट गुड फॉर द आइसोलेशन ऑफ, और सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा है। तो वहाँ के अगर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया अगर आइसोलेट किया है या फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आइसोलेट किए तो वो वर्क करेंगे ना इस टू मिटिगेट द सलाइन सॉइल कंडीशन? सर देखिए, जो मैं अभी आपको बताया कि मैं 7.8 पीएच तक ही जा पाया हूँ। 10 हाँ। पीएच अभी कभी काफी बड़ी चीज है मेरे लिए ना। सो हम्म वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आइसोलेशन अगर करेंगे तो वही न्यूट्रलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया वहां पे अल्कलाइन मीडियम में सर्वाइव कर रहा है, तो डेफिनेटली वो मेरे ख्याल से आर के बैक्टीरिया ही होना चाहिए वहां पे जो कर रहा है। तो आइसोलेशन के बाद क्या करेक्टराइजेशन आता है उसका, उसके बेसिस पे हम उसका आगे पता लगा ओके ओके। थैंक यू सर। सकते हैं। सर अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। Barsha Pandian, if you have any query, may ask now to explain in English. So our expert will explain it. Barsha Pandian. Okay. So, dear students and research scholars, today we are very fortunate that today with us one expert, Rajnish sir, is here. So, if you have any query regarding that means biofertilizer, or if you have any problem in your research, now you may ask to both our expert, Dr. Prakash Rao Nagrale sir is here, Rajnish sir is here. Any scientist or faculty members, I request everyone to please share your research experience. Dr. B. Padma Ban, हर्षिता पुजारी, मंगलम सोनी,
Hello. Yes, Tanisha. Hello. I am from KC College, Mumbai. Yes, ma'am. I wanted to ask, so if I'm doing my plant growth promoting bacteria isolation, and if I'm doing it from bulk soil where plants are not there, is there possibility that I will get plant growth promoting bacteria? So basically, I'm Can not you taking repeat, the ma'am? rhizosphere. Yes. I'm not taking the rhizosphere soil, but the bulk soil. हम्म तो So अकॉर्डिंग in टू मी that case, पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, पॉसिबिलिटी कम हो but जाता it है is अकॉर्डिंग not टू मी. zero, like. इट्स नॉट जीरो, पॉसिबिलिटी बहुत कम है. सो आइसोलेशन में भी आपको काफी टाइम लग जाएगा, उसके बाद आपको Yes, करेक्टराइजेशन में matlab, काफी टाइम I'm लग जाएगा. doing this right now. It has been like 6, 7 months. I'm doing the research on, like, I have collected the sample and I'm working on it, but like, I have not got any potential bacteria till now. सो आपने सिलेक्ट So किया है should तो उस I? पर टाइम लगना चाहिए Yes, but like, मेरे मान. I wanted to discuss. So So, anyone, if there are scholars or something like that, I also want to join you. I put my number there, my mail ID is there, so we can discuss. I also have a question for all scholars if someone knows about it. कि अभी तक जितना भी बायो फर्टिलाइजर हमने देखा, कैल्शियम कार्बोनेट बायो फर्टिलाइजर हमने देखा है, हमने चारकोल बेस्ड बायो फर्टिलाइजर हमने देखा, फिर वाटर बेस्ड बायो फर्टिलाइजर आए. सो प्रेजेंटली मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ कि मैं उसको एक सिग्मोइड कर्व या ग्रोथ कर्व में हमने डायोक्सिक कर्व हमने पढ़ा, तो किस तरह से हम उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करें और उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर पाए ताकि हमें बहुत स्पीडली उसके मेटाबोलाइट्स. सो किसी के पास अगर कोई भी क्लू है तो क्या वो बता सकते. Encapsulation. मैकेनिज्म क्या हो. Your name is not showing it. Kindly introduce yourself first, madam. Okay, my name is Richa Sharma. I'm currently pursuing MSc Geology from University of Rajasthan. Okay. I guess for increasing the shelf life, we can use nanoparticles also. Okay. And the encapsulations also can be used. Okay. And for metabolism, to increase their metabolism, I have a solution that I'm going on with it. So I replace this biofertilizer, water-based biofertilizer to jaggery-based biofertilizer. So now they are producing proper, and I need to increase the viability and shelf life and this metabolism that is. सर यहाँ पे बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले कर सकते हैं क्या? अच्छा सर, मतलब अगर वो बायोफिल्म करता है तो वायबिलिटी की ज्यादा रहती है देन द नॉर्मल बैक्टीरिया इफ दे आर एक्चुअली क्या है, प्रोड्यूसिंग द. बायो फर्टिलाइजर के अंदर फॉर्मुलेशन भी चलता है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन सा बैक्टीरिया उसके साथ काम करेगा, कम्युनलिज्म में रहेगा. पैरासिटिज्म में अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. अच्छा. सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी इनका चाहिए, है ना. And I've seen this jaggery fertilizer mostly fungus. So I was on a workshop at a place with ICR. So they were making the formulation using jaggery, but they were doing it for fungus only. So are you currently working with bacteria with the jaggery based technique? yes, I have a proper company and RD team is working on. So I always provide jaggery based Oh, azotobacter and because I azospirillum. think there is, hmm, because I think while working with jaggery, pH is Mhm. a bit different. It has a low pH when you make the media out of it. You, you know, we have a product from Pedalite Hmm. और हर जगह में वो यूज Hmm. होता है ना, फिक्सिट जो आता है, तो Hmm. वहां पे आप एक चीज देखते हैं, हमेशा वो Hmm. हमें दो प्रोडक्ट देते हैं.
जो जिस टाइम पे हम दो प्रोडक्ट को मिला देंगे, मिलाने के बाद ही वो अपना वर्किंग स्टार्ट कर। मैंने जो बनाया, जो मेरी टीम ने बना के दिया, जो कंपनी हमारा सेल कर रही है, उसमें हम वो दोनों प्रोडक्ट जो है अलग अलग देते हैं। जागरी बेस्ड अलग देते हैं और नॉर्मल बायो फर्टिलाइजर वाटर बेस्ड अलग देते हैं। एट द टाइम ऑफ इरिगेशन और वो फर्टिगेशन कर रहा है फार्मर, उस दौरान वो उन दोनों को मिक्स करेगा। अगर शुरुआत से जागरी मिला देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। ये है। यस। वहां पे पीएच नहीं, हमें काफी चीजें देखनी पड़ेंगी। कार्बन सोर्स अगर हम देखें, ग्लूकोज की जगह सुक्रोज आ रहा है, वो भी बैक्टीरिया के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा उस पर प्रॉपरली। कौन सा बैक्टीरिया, While fermenting only, while making the fungus in mass culture, jaggery-based media is used. जैगरी बेस्ड मीडिया इज यूज ओनली फॉर द सीएफयू काउंट। जिस टाइम पे हमें सीएफयू काउंट उसका इंक्रीज करना है, जो मुझे लगता है कि जब हमारे को उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, उस दौरान हम जैगरी यूज Hmm. करते हैं। Hmm. Okay. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you so much. Now, Rajendra Panchal, Anurag Jadhav, Kumari Pallavi. Anyone from the participants, if you have any means information or your research observation or experience, you may share. Sir, Yes, Kanishka madam. I wanted to ask that the bioinoculant that you have made, you're working on saline soil or the normal soil? This question to Dr. Amol sir. Huh? Don't remember the name, sir. Dr. Naglekar sir, I am audible to you, sir. Yes, yes, yes. There is one Yes. question from Kanishka madam to you. Can you repeat the question, ma'am, please? Sorry for that. Sir, I was asking that whether you are working on saline soil or saline bioinoculant or regular bioinoculant. No, I am working on, madam, to mitigate the saline soil. To mitigate the saline soil with the help of saline halophilic bacteria. Halophilic bacteria. Yes, I will also. So while you are performing the PGPR assays, the plant growth promoting bacteria assay, whatever you perform, so is there the basic component of the media remains same or you modify it according to the salinity? Yes, madam. Difference? Yes. There are some selective media. For example, horikoshi, or we can increase our nutrient agar pH, for example, or any media. We have to maintain the pH of that media according to the source pH, from where we can isolate the bacteria. No, it's like I have done the isolation thing. Now I want to test whether my bacteria is able to fix nitrogen, or so I'm using Jensen's media to test that. But do I need to make the regular Jensen media or does that work? Sorry, I'm working on it, ma'am. मैम, आप जेनसन sir. मीडिया के अंदर से कुछ कंपोनेंट्स लेके सिलेक्टिव मीडिया वहां पे प्रिपेयर कीजिए, Yes, that is what I'm saying. तभी वो हो पाए। नहीं मतलब if my bacteria is not able to survive on normal salinity, if I grow them in normal nutrient media, they don't survive. But if I grow them in 5% NaCl media, they survive. So like I'm asking that if in Jensen's media, it is not going to have 5% NaCl. So should I inoculate 5% NaCl in my media and then grow it? Or should I just use the normal Jensen's media because I'm not getting the result with it? You can also try on MgCl. Okay. So Magnesium I need to chloride is supplement also my media with NaCl first. you need to change with their substitutes like NaCl to MgCl, and after that you need to observe them. What is the growth there? There is any
bioassay in the any curve or zone of inhibition, such type of things you need to observe. After that, you will Yes. get the results. Because when I did the normal Jensen's media, the bacteria did not grow only. So Yes, So I maybe think madam. that might Yes, your madam. any one of Modification. मतलब, Yes, madam. modification in the media. Yes, yes, yes. With the initial or with the particular component, we have to modify it. Then and then they will grow, Okay, as I think. okay, okay, sir. Thank you. Thank you, Kanishka. So, student, do you have any question to our experts? So you may ask now. Sir, Yeah, Barsha. sir, I am Varsha Pandian from Annamala University. I'm currently working on isolating bacteria from rhizosporic soil, and I want to formulate a liquid biofertilizer. Here I have a doubt. Does the bacterial strain I use need to be spore forming, or can I use non-spore forming bacteria as well? Will use non-spore forming bacteria cause any issues in the formulation, shelf life, or field performance of the biofertilizer, sir? Hello? Hello, you are audible, madam. Okay. Yes, yes. Actually, if you are using endosperm forming bacteria, firstly we need to know about their pathogenicity also. Many pathogenic strains are also there in Rajasthan that I observe many times. So it might enhance or might control your different bacteria with them, like synergic or parasitism they can show. So firstly, you need to check their communalism, parasitism, and dissolve, and after that you can use. For example, if you are talking about the spore forming bacteria, which type of spore forming bacteria, or which type of strain. So firstly, you need to identify them proper. After that, you can. And without, if you use non-spore forming bacteria, they are, I think, they are good for this biofertilizer. Thank you, sir. Hello. So one of my can I ask one question? Sir, we know that use of CRISPR is increasing nowadays in drug developments in disease control. Some of them are also used in agriculture field. So, CRISPR को भी use किया जा रहा है बायोफर्टिलाइजर्स के लिए और ये सक्सेसफुल हो रहा है अभी. Can you repeat? क्या सक्सेसफुल हो रहा है? CRISPR CRISPR कैस है टेक्नोलॉजी जो भी यूज कर रहे हैं हम ड्रग के लिए भी यूज किया तो इसको हम बायोफर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं तो अभी ऐसा कोई रिसेंट स्टडीज हुई है क्या? स्टडीज चल रही हैं, लेकिन जो मेरा मानना है क्या है कि इन विट्रो कंडीशन, इन विवो कंडीशन, देयर आर ह्यूज डिफरेंस. इन विट्रो कंडीशन में आप रिजल्ट लेके आते हैं लैब में, सो जब आप उसका कॉमर्शलाइजेशन पे जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाते हैं, सो प्रोडक्ट हमारा तभी क्योंकि मैं जो है बिजनेस के अकॉर्डिंग देखता हूँ उस चीज को. कहीं भी अगर फार्मर के लिए अगर आप बना रहे हैं, सो फार्मर तक वो पहुंचना चाहिए, लैब तक सीमित नहीं होना चाहिए. सो अभी तक उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ. Like one of the studies says that Azotobacter strains पे यूज किया गया है उसकी नाइट्रोजनस एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए CRISPR को. तो लाइक दिस अभी ऐसा आगे भी चल सकता है लाइक स्ट्रेस को भी अपन स्ट्रेस टॉलरेंस भी बढ़ा ही सकते हैं उससे. हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है ना, उसमें किस तरह से उसको बढ़ाएंगे या किस तरह से उसको वर्किंग होगी आगे, वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत ही आने जाने से. और आगे उसका Okay, your मेन point क्या है is कि this. आप कोई भी टेक्निक यूज करें, आप कोई भी माइक्रोबियल इनोकुलेंट आप यूज करें, कोई भी आप जो है स्ट्रेन यूज करें, मेन चीज है अकॉर्डिंग टू मी कि क्या उसका कमर्शलाइजेशन हो सकता है या नहीं.
क्योंकि लैब, देखिए मेरा डायरेक्टली एक ही मानना है कि आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप थीसिस के लिए काम ना करें, हमारे फार्मर्स के लिए भी कुछ करें। थीसिस जब सबमिट हो जाती है उसके बाद आप उसका कॉमर्शलाइजेशन पे लेके जाएं, कोई भी टेक्निक आप यूज करें। सो जब भी हम किसी भी टेक्निक को सिलेक्ट करते हैं तो हम वहां तक का सोच के चलें कि हम उसको कॉमर्शलाइजेशन में लेके जा सकते हैं या नहीं। Okay, commercialization purpose should be kept in mind. So as you told that you are from Rajasthan Agriculture University? No, sir. Right now, I'm pursuing my MSc Zoology from University of Rajasthan. University I'm of not from. Rajasthan. Yes, sir. Okay, I'm a Zoology. Sir, Okay. one more question I have, sir. What are the current quality control standards for biofertilizers? Mm-hmm. जो Presently, define according to Sir, FCO. I request you to, sir, explain it in detail because there are several students of the BSc and MSc standard. Okay. According to FCO, Fertilizer Control Order. Okay. अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, हमें क्वालिटी के लिए सबसे पहले CFU काउंट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को ही काउंट करना होता है, उसके अलावा हमारे पास कोई स्टैंडर्ड उसका नहीं है अकॉर्डिंग टू FCO। Okay, sir. CFU काउंट ही हम उसका चेक करते हैं। और अगर थोड़ा सा एडवांस अगर आप जाना चाहें तो उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट एसेज लगा सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट तक जा सकते हैं, किस तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट उसका, क्योंकि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है नॉर्मली प्राइमरी मेटाबोलाइट उसका इतना यूजफुल नहीं आता है हमारे लिए एग्रीकल्चर में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही हम यूज करवा, जिसका अमाउंट भी बहुत कम होता है, उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो पाता है। तो हमारे को चाहिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट को कैसे इंक्रीज किया जाए। Okay, sir. If any of you, if you want some knowledge or something like this, you can visit my website. Normally I'm performing there, and my recent projects are going on, and all things are there about biofertilizers and this all natural farming and organic farming. I'm working on this project, so you can check there. Different. You get the blogs and these all things you can get there about these all biofertilizers. For example, azo, azoto, myco, zinc, phospho, nitro, KMB, and bionematicide, pesticide, fungicide, insecticide, all details are there. Which type of strain we are using, how they react with, or how they are doing performance in this all. Okay, I am dropping a link there so you can check. So I have one, sir, means question for the students, sir. Yes, sir. So that the students will be inspired. That what inspired you to start a company based on the biofertilizers, sir? Ah, it's a treasury. This one is for the It's a student. actually, sir, it's a treasury. Huh? I was in ICMR during COVID, and during your isolation of this COVID virus, कोरोना वायरस जिस टाइम पे आया था, सो मैं लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में था, वहाँ पे आइसोलेशन में था। तो 17 दिन तक एक प्रेशर रहा, मैं सो नहीं पाया, और बहुत अच्छे तरीके से ये रहा कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन नहीं ICMR में मैं सरवाइव कर पाया। सो मैंने देखा कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, कृषि प्रधान देश भारत है। सो सबसे पहले अगर वहां से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो, सो हो, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर प्रोफेसर स्वामीनाथन ने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया वो हरियाणा पंजाब से किया। आज हरियाणा पंजाब उस कगार पे है सर कि एक छोटे से ब्लॉक के अंदर भी अगर देखें तो मोर देन 300-400 कैंसर पेशेंट्स वहाँ पे हैं। पंजाब से सर कैंसर स्पेशल ट्रेन चलती है, वो मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर से ही हो रहा है। आप डिफरेंट आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं सर। फार्मर के ब्लड के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड हमें मिल रहे हैं, मदर मिल्क के अंदर, फीडिंग मिल्क के अंदर हमें मिल रहे हैं, गाय के पशुओं के मिल्क के अंदर मिल रहे हैं। तो सारा एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो वहां से मैं चल के और इसी लाइन को मैंने चूज किया। सो प्रेजेंटली जो है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एक पैशन बन चुका है, उसी पे मैं काम कर। Thank you so much, sir. So there is Thank one you. question from the Vivek Upasani, that how many NABL accredited laboratory for biofertilizers in India? Very few. Very few. Mainly
National Center for Organic Farming and Natural Farming is there in Ghaziabad. So Dr. Professor Chandra. वो बोल रहा मैं सुन रहा खाली. हेलो. Yes, sir. डॉक्टर चंद्रा के अंडर में मैंने काम किया है, जो एक्स डायरेक्टर रहे हैं. सो आफ्टर दैट जो है मुझे NABL रिकॉग्नाइजेशन या एक्रेडिटेशन हम देखते हैं. सबसे ज्यादा धांधली यहीं पे है. अभी कोई एक्रेडिटेशन नहीं लेता है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेता है डायरेक्टली. प्रॉब्लम क्या है सर? क्या मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ? मैं स्कॉलर्स का भी बताना चाहूंगा. मेन प्रॉब्लम जो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर या ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इस टाइम पे चल रहा है, वो ये है कि कोई भी जो थोड़ा सा भी यूट्यूब के ऊपर चेक करता है ना कि नेचुरल फार्मिंग ये होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये होता है, वो कंपनी खोल के स्टार्ट कर दे. फार्मर को पता ही नहीं चला होता कि उनको क्या दिया जा रहा है. इवन बहुत नामी ग्रामी कंपनीज, जो रेपुटेड कंपनीज हैं, वो भी फार्मर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं. आप देख सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के नाम पे सब नाइट्रोबेंजीन तक जा रहा है. सो कहाँ तक वो, किस तरह से वो कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और शायद नेक्स्ट जनरेशन जो अभी स्कॉलर्स हमारे हैं वो उस चीज को कंट्रोल कर पाए, वो उस चीज को देख पाए. जहां से ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था सर, सो 2013 का जो वहां का सॉइल रिपोर्ट है, कार्बन कंटेंट 0.5% था. 2023 में 0.25% रह गया है. और हम एग्रीकल्चर के लिए मानते हैं कि 2 to 3% कार्बन कंटेंट वहां पे रहना चाहिए. सो जहां से ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, वो धरती जो है वो बंजर हो चुकी है. सो अब ध्यान देना होगा, स्कॉलर्स को आगे आना होगा. Thank you. And sir, Thank can you briefly describe your sir, production process? Simply, sir, briefly, for the students and the Sir, researchers. actually, when I start my journey from here, at that time I'm working on cow dung based biofertilizer. So I also work on substitute of DAP, diammonium phosphate is the foundation product for agriculture. So I just recently gave to central government this project to start it and give me permission to for the production. And for the biofertilizers, we start from media preparation, sterilization, after that inoculation, and fermenters are there. So it's very basic process, and you can find it anywhere. The specialized thing is in such type of fertilizer is the selection of media, selection of microorganisms, their working and their how they work, what is the mechanism, and such type of things are important. Thank you. Thank you. So I have just shared one feedback form in the chat box. So I request all the contributor to fill out this form so that we can dispatch the e-certificate to all the contributors. So Tanishka Kaki madam, Rajnish sir, Nagarale sir, Sharma madam, Barsa Pandian. Just take 1 or 2 minutes and fill out this form, feedback form. So Dr. Amol sir, do you want to share something more? Dr. Amol sir. Or the or No, sir. Tanishka madam. What I think, sir, Mhm. there are many young researcher or the college students are there. Yes, sir. So, as I think, there is a need to work on agriculture, Mhm. because if the agriculture will survive, then ultimately it is helpful to our survival. There is a Yes. direct relation between the agriculture and the human life. Mhm. So that's why I'm currently concentrate on the this topic, to mitigate the different condition which are faced by the farmer in their field. So I'm currently working on it. Yes, sir. Rajni sir also told us that we should concentrate mainly on the commercialization and how can we help the farmers by our research. So dear students, if you have any query, if you cannot unmute yourself,
You can write in the chat box. I request all the students contributed, Dr. Tanishka Madam, Rajnish Sir, Nagalkar Sir, Madam, and Barsa Pandian, just fill out this form and all the participants. I think there is no any question today from the student side. So, form done, sir. I also want to announce one thing that Sure. many bachelor students, master students, and PhD students are working with me as a content writer. So if they want to know about the different projects going on agriculture microbiology all of the around the globe, so they can join me. They can join me in my project. So just kindly put drop your some mail ID and WhatsApp number in the chat box so that you can contact. Yes, I dropped it. I dropped it. So thank you all for your active engagement and insightful contributions to today's discussion on the topic biofertilizers. And I am very especially thankful to Dr. Rajnish sir, Dr. Nagalkar sir, Dr. Tanisha Kika madam, and the Barsa Pandian and the Sarma for their contribution in this roundtable discussion today. So thanks to all of you for all the students and the research scholar for participating in this roundtable discussion today. And I hope this contribution and this type of contribution and the participation in the coming sessions also. Thank you all for joining today's session. Thank you. Thank you, sir. Thank you Thank to you. all of you. Thank you all.